Hello students. Today we'll discuss principle of 1H1 NMR or photon magnetic resonance. PMR, proton magnetic proton magnetic resonance. मैं हाइड्रोजन रो NMR स्टडी करिवा हाइड्रोजन हेई परिबो कार्बन 13 NMR हेई परिबो स्टडी परिबो बट इओसिलस in BSc 6th semester will study only 1H1 NMR. So proton magnetic resonance. So proton magnetic resonance যদি পড়িয়া ଆମେ principle भी पढ़िया कहार PMR spectroscopy और 1H1 NMR proton magnetic resonance. चलो देखिए principle कौन है. Principle बहुत important. ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ यार न्यूक्लियस ର ସ୍ପିନ୍ ଥାଏ ସ୍ପିନ୍ ମେ ବି एंटी क्लॉकवाइज थिबो कोन कहथिली डायरेक्शन bn ର डायरेक्शन bn मैग्नेटिक फील्ड रो it act as tiny magnet यार डायरेक्शन कोड थिबो अपवर्ड similarly कहथिले कोन और द स्पिन मे बी rotate in clockwise direction କରୁଥିବ bn is a downward हम କହିଥିଲେ due to spin motion there is magnetic field is created induced so a nucleus acts as a tiny magnet suppose हम कौन करिवा कोनोसी जदि हम हाइड्रोजन रे कोन थे हाइड्रोजन रे न्यूक्लियस अछि इलेक्ट्रॉन अछि सपोज हम कौन करिवा फ्री न्यूक्लियस मींस an isolated nucleus को हम बाहर करि आनिबा तबकडी हम ये एटम को नेबानी एटम रे थिबा न्यूक्लियस हम थियोरेटिकली कहउ जंदी सिम तो करिबो बडा स्टडी करिबा भाबेगिरी कोन suppose we considered a naked nucleus means a isolated nucleus केवल न्यूक्लियस को स्टडी करिबा ए जो एटम अथवा इलेक्ट्रॉन ये अदर पार्ट हम न्यूक्लियर पार्ट स्टडी करिबा जते हम कोनोसी न्यूक्लियस को नै कि आसीबा देखो ध्यान दियो a free nucleus for consider a free nucleus naked nucleus free nucleus माने ये जो एटम हाइड्रोजन एटम रे थिबा न्यूक्लियस को हमें आइसोलेट करी बाहर करी हम स्टडी करिबा मींस तार जो आउटर पार्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर पार्ट अछि आउटर न्यूक्लियर पार्ट अछि यदि हाइड्रोजन न्यूक्लियस हुए ये तारा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करे बट हम कहा स्टडी करिबा केवल हम न्यूक्लियर पार्ट को आनिबा स्टडी करिबा मींस आइसोलेटेड न्यूक्लियस जितबे न्यूक्लियस कौनसी मैग्नेटिक फील्ड रो प्रेजेंस से आसे नहीं ता माने when there is absence of nucleus suppose this is the spin motion anticlockwise another spin motion suppose this is the clockwise this is clockwise when there is no external magnetic field यदि कोनोसी बाहर कोनोसी magnetic field यदि अप्लाई होइनी then the nucleus are present in degenerate energy state ताने यदि हम एनर्जी ऑर्डर लिखले एनर्जी यदि हम एनर्जी लिखले एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर see here
nuclear spin. The nuclear spin are present when absence of absence of external magnetic field. External absence of external magnetic field. Magnetic field. External magnetic field कौन है ना B naught. B naught जेड कौन absence of कौन सी बाहर external magnetic field में देना नहीं तो सेतरे कौन थी वो ये या जो एनर्जी स्टेट है को स्टेट थी वो जो एनर्जी स्टेट कौन थी यारो ना डीजेनरेट कौन से माने सेम एनर्जी स्टेट that is same energy state no change same they are present the spins are present the nuclear spins are present in degenerate degenerate state माने कौन सी एनर्जी तारो चेंज हुई माने they are present same energy ता माने this nuclei which spin in anticlockwise and this nuclei which spin is clockwise both nuclei have same energy that means both are present in degenerate state when external energy is applied যদি আমি বাহারু কোনসি এনার্জি আপ্লাই করিয়া যেতেবেলে external energy প্রেজেন্সরে এই যে ডিজেনারেট নিউক্লিয়াই আনিবা ମୁଁ ଏଠି ତ ଏନର୍ଜି ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖେଇବି ଏଠି ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବି ଦେଖ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଏଠି suppose this nuclei spin motion is anticlockwise reduce magnetic radiation this when external magnetic field is applied to the nuclei nuclei को हम external magnetic field apply कले देखो हम कौन कहथिले ये कौन करे ये गोटे टिनी मैग्नेट भली काम करे माने सपोज ये हला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल ये हला नॉर्थ पोल दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड external magnetic field that is B naught when external magnetic field is applied हमें समझ ये गोटे टिनी मैग्नेट भली काम करे त माने ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल बाहर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हैला हम जानते कौन सी मैग्नेटिक अन्य कौन सी मैग्नेट पाखो हम नहीं आसीबा तेठी कौन हबो एठी सेम पोल रिपेल टू इच अदर ताने नॉर्थ पोल रिपेल टू इच अदर साउथ पोल नॉर्थ पोल अट्रैक्ट टू इच अदर ताबे ध्यान दे एठी कौन हो जिवो now this nuclei want to stay in lower energy that means in presence of magnetic field in presence of external magnetic field this spin this north try to attract towards south simultaneously this south attract to north then then this nuclei is present as shown see here this is north this is south this is south this is north it's not field now the energy decreases means due to attraction of south pole of external magnetic field north pole of nuclei एडी अट्रैक्शन हबो साउथ नॉर्थ सो ये चाहे कोन लोअर एनर्जी जो अट्रैक्शन हबो ट्राई टू प्रेजेंस गोज टू लोअर एनर्जी स्टेट सिमिलर ओके तागर एठी कोन हबो जदी न्यूक्लियाई alignment with the external magnetic field जदी
nuclei alignment with the external magnetic field ମାନେ magnetic field ର direction ଯୁଆଡକୁ ଅଛି ମାନେ if ଦେଖିଲେ ଆମେ କଣ ଆଉ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ କରୁଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପିଲାଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଯଦି magnetic field nuclear magnet କଣ କହିଥିଲେ spin motion is anticlockwise so magnetic field is upward when B naught external magnetic field is applied when external magnetic field is applied the nuclei the direction of the magnetic field of nuclei is alignment means same the direction of external magnetic field যদি আমি external magnetic field apply করিবা এটি then what happens when external magnetic field is applied then one spin which is aligned with the external magnetic field is goes to down means the energy decreases means one state energy is spin state energy decreases another spin state energy increases that means যেহেতু the magnetic field of nuclei direction is upward magnetic external magnetic field B naught magnetic field भी कौन upward both are same direction the magnetic field direction is same মানে both are कौन alignment when the magnetic field of nuclei is alignment with when magnetic field of nuclei alignment with external magnetic field इकार magnetic field इकोना Bn when Bn alignment with B naught then the energy of this nuclei decreases that means these go to in lower energy level this goes to lower energy level see here this spin state this nuclear spin देखो कौन अच्छी opposing करे ये कौन करे कड़ी when it is anticlockwise motion when B naught the direction of magnetic field of nuclei is opposed the external magnetic field the external magnetic field oppose करे ଏଠି ତାହେଲେ ইয়ার এনার্জি କଣ ହବ increase ହେଇଯିବ ତାମାନେ the nuclei which the magnetic field of nuclei which oppose the external magnetic field then the energy of that nuclei increase so these nuclei goes to in a higher energy level this goes to higher energy level first କଣ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ absent ଥିଲା magnetic field there is no splitting no the energy of all spin states are present in degenerate state ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର energy ସମାନ ଥାଏ absence of magnetic field the energy of all spin states are same that means they are present in degenerate state but when magnetic field apply हुए in presence of magnetic field the splitting takes place one spin goes to lower energy level one spin goes to higher energy level which one goes to lower energy level which magnetic field the nuclei having magnetic field if alignment with the external magnetic field then goes to down due to decreasing energy and which oppose the external magnetic field goes to higher energy level then there is a energy gap delta E is produced
energy gap delta E is produced because the spins are present different magnetic field. ଏତିକି ହେଲା magnetic field ର presence ରେ କଣ ହୁଏ, magnetic field ର absence ରେ କଣ ହୁଏ କାହାର spin state of nucleus. न्यूक्लियर स्पिन स्टेट रो मैग्नेटिक फील्ड रो प्रेजेंस रे कोन हुए एब्सेंस रे कोन हुए देन हमको एनएमआर स्पेक्ट्रा केतला हम कहबा एनएमआर मैग्नेटिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस केतला हम कहबा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो कर ध्यान दो जते बेले एक्सटर्नल बाहरु कोन करबा एडी ग्राउंड स्टेट दिस ग्राउंड स्टेट दिस excited state. This is excited state. This is plus half. This is plus half. This is minus half. When radio wave, when radio wave put on the ground state, then what happens? The energy of this gap, when the energy gap delta E is matching with or match करियो का सहित रेडियो वेव रो एनर्जी सहित एडी एनर्जी एडी इंसिडेंट हैला रेडियो वेव ए रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी अछि एठी मध्ये फ्रीक्वेंसी अछि ए जो गैप ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट मध्ये जो गैप अछि एडी फ्रीक्वेंसी अछि when the frequency of this gap means the frequency of nuclei when the frequency or energy this frequency jeti frequency darkar jump kariya pai eti jeti ki frequency darkar from ground state to excited state ku jiba pai सेतिकी अमाउंट रो रेडियो वेव ये पाई जिवो then transition of spin takes place. This spin goes to this level and the spin state also changes. Then resonance of nucleus with radio waves occur, so it is called nuclear magnetic resonance. This is called nuclear magnetic resonance. बुझिपाल कि नहीं को देन जदि पुणी चाहिए रिपीट करिया पई देखो एठी हम कोन कहले absence of magnetic field all spin states are present in degenerate state when external magnetic field is applied the splitting takes place one spin state goes to lower level one spin state goes to higher level तापर हम कोन कले जो ग्राउंड लेवल थिबा स्पिन स्टेट ऊपर जदि हम रेडियो वेव रेडिएशन पुट कले रेडियो वेव रेडिएशन पुट कले एडी कोन हबो से पर्यंत या को ऑब्जर्व करिवनी ध्यान दियो जब हम सीधा पुट कर ये ऑब्जर्व कर नाही केते बेले या को ऑब्जर्व करिवो दिस रेडियो वेव इज ऑब्जर्व बाय द न्यूक्लियाई this radio wave absorbed by the nuclei when the energy gap that means this energy gap is matching with the absorbing energy then resonance occur that means जेतिकी amount रो energy को required to goes to this level जेतिकी frequency absorb goes from this level to this level setic frequency radiation मिलले then resonance means these go to higher energy level and spin flipping takes place flipping means spin state changes then resonance is occur and this spin goes to this level and the spin state changes then you can say nuclear magnetic resonance is occur हम कहबा कोन एठी ना nuclear magnetic resonance एठी हैला so ये होची कोन ना simply the principle of कोन
NMR एवढी देखो एटी डेल्टा ई जो गैप एनर्जी गैप डेल्टा ई देखो डेल्टा ई गैप धीरे कौन जेडी इंक्रीज है देखो इंक्रीज है तार बी नॉट इज ये कौन डेल्टा ई is directly proportional B naught from this principle we get what we get देखो एटी कौन पाइबा एटी प्रिंसिपल में कौन पाइले प्रिंसिपल में कौन पाइले delta E is directly proportional external magnetic field. This is a external or applied external or applied magnetic field. Magnetic field. Delta is the energy gap. Already, B this B naught value the body jiba the energy gap increases. That means the B naught ଆମେ increase କରୁଛନ୍ତି B naught ଯଦି ବଢେଇଲେ then delta E also small ଥିଲା ଟିକେ increases then delta E directly proportional B naught delta E ଯଦି proportional ଉଠେଇଦେବା ଏଠି proportional चिन्ह उठेଇ କଣ delta E is equal to ध्यान दियो कि delta E is equal to h by 2 pi gamma. This is gamma. ये बहुत इंपोर्टेंट है फॉर्मूला मैथमेटिकल प्रॉब्लम आसे या बेस करी गामा बी नॉट असलर कौन डेल्टा इज इक्वल टू h by 2 pi gamma b नॉट एक इसमें बच्चों थोड़ी h by 2 pi gamma b नॉट where gamma कौन गायरोमैग्नेटिक देखिए जो गामा कौन थी गायरोमैग्नेटिक रेशियो what is the significance of gamma हमें देखिए परे what is the significance of gamma this is a gyromagnetic ratio it is Planck constant this is constant term with gamma value is different for different nuclei gamma कौन या पर हम देखिबा gamma significance कौन ये देखि दो डेल्टा आसिला कौन s by 2 pi कौन gamma b naught from this you will get the delta equal to this देखो हम कौन कहले हमारे डेल्टा E is equal to s by 2 pi गायरोमैग्नेटिक क्यों ये गामा b naught उनको कहले जो डेल्टा E ध्यान दो दिस डेल्टा E रो वैल्यू कहा सहित समान दिस रेडियो वेव रो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव जति के हमको मिलियो फोटोन त माने h nu of radio wave is equal to delta E why कहना delta E और h nu of radio wave समान हले एठी कोन बडी रेजोनेंस अकर माने एनएमआर सिग्नल हमको मिलिबो त एठी हम कोन लिखिबा आपन बहुत जीडा में कोन लिखिबा एठी हम लिखिबा राइट हियर फर्स्ट क्वेश्चन लिखि दो ये हम कोन लिखिबा ताले सी हम कोन लिखिबा हम कौन कहले फ्रीक्वेंसी ऑफ कार फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्व रेडिएशन माने रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी कौन हबो मैचिंग विथ द एनर्जी गैप
ता माने हम कौन पढ़ले तो ये लिखि दूजी पुणी ये कौन थिला हमरो स्पिन थिला स्पिन स्टेट दिस इज एंटीक्लॉकवाइज direction, this is opposite direction, so spin should was the clockwise. When electromagnetic radiation put radio wave जो put कले radio wave frequency अच्छी suppose n h nu रो photon when put here the h nu photon is matching with delta e जो तो match करियो equal हबो then this nuclei absorb the radio wave and give NMR signal. That means delta E is equal to what? Delta E is equal to H nu. This nu, what this nu? This nu is कौन करें हमें ABS absorb frequency. ताकि radio frequency जो है absorb करे. That is radio frequency. So तार कौन है जो from equation 1 equation 2 करते ही कौन डाले from equation 1 2 from equation 1 and equation 2 what delta I left side समान अच्छी right कौन जोड़ी h nu absorption देखो absorption इसमें निकले कहाँ कि ना ये तब observe करे this is the frequency of radio wave this is the frequency of a radio wave which is absorbed by the nuclei. So delta E energy gap is equal to h nu means frequency of radio wave matching है जो समान है जीवो पाके समान है जीवो then हम कौन हमको NMR signal मिलियो. फिर कौन होता है ठी h nu absorption is equal to what h by 2 pi by this is gamma d naught h cancel है yes h cancel finally हमको मिलियो new absorption is equal to लेकिन ऊपर finally हमको मिल जाए हमको ठी finally हम पाई जाए ठी एठी लिखो जी new ABS radio frequency और absorption frequency is equal to what happens is equal to h is पड़ जाए gamma by 2 pi d naught. This is the absorption frequency. This frequency एती frequency तेरे nuclei को मिलीबो ध्यान दियो तेरे nuclei को एती frequency मिलीबो then spin transition occur and give NMR signal. If you use the principle, then it देखला में transition हैला nuclear transition हैला body question आसुची कोन एठी तेले रेडिएशन ध्यान दे एठी हम गले थिला एठी स्पिन direction मतलब एठी ये splitting हैला this is the ground state this is the excited state direction spin direction this one radiation radio wave या pro put हैला ताले रेडियो वेव रो ए जो ग्राउंड स्टेट रो न्यूक्लियाई या मध्यरे कोन हुए ध्यान दियो रेडियो वेव दिस ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई ले इंटरैक्ट करंदी इटी कोन एमती हुए it goes to high level हम कहले दिस एनर्जी गैप से तो ये मैचिंग करले एती एनर्जी मिल गले ये जंप करे हेले एनर्जी को इटी से केमती पाए रेडियो को से केमती ऑब्जर्व करे दिस
प्रिंसिपल द रेडियो वेव कौन है इंटरेक्शन ऑफ रेडियो वेव interaction of radio wave by the ground state nuclei interaction of radio wave by the ground state nuclei is called principle of precision and क्या ये जो interaction radio wave interaction with ground state nuclei रो हेले कौन हुए सेटा कौन कहबे ना नेम कौन करिया में principle of precision तमाने आपको जो एक्सप्लेन करिबा एटी व्हाट हैपेंस एटी कौन एमती हैला एटी कौन इंटरेक्शन हैला एटी कौन घटिला न्यूक्लियस सहित यार देन ये कौन कला एटी की हाई लेवल को गला याकू स्टडी करिबा ए जो रेडियो वेव रो इंटरेक्शन होती ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई कहा द्वारा स्टडी करिबा स्टडीड बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रिसिशन नेक्स्ट क्लास रे हम पढिया कोन प्रिंसिपल ऑफ प्रिसिशन नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबा प्रिंसिपल ऑफ प्रिसिशन आज एतिक थैंक यू